let us now study the vertical and horizontal component of Earth's magnetic field in some detail. So we had taken the example of two planes. One is the geographical meridian and another is the magnetic meridian at a particular place on Earth. So in this board, we are showing the diagram of magnetic meridian plane. This is the magnetic meridian plane. In it, we have Earth's magnetic field B in magnetic south, magnetic north direction. The horizontal component of this Earth's magnetic field we are showing by the symbol BH, B subscript H. The vertical component of Earth's magnetic field B is denoted by the symbol B subscript V. So BH is the horizontal component of Earth's magnetic field, BV is the vertical component of Earth's magnetic field. So if we want to find the value of BH and BV, we will show this magnetic field in the triangle form. So if I draw a triangle such that the hypotenuse is Earth's magnetic field B, then in the horizontal direction we have magnetic field's horizontal component BH. In the vertical direction we have the vertical component of Earth's magnetic field. If we consider this triangle, then the angle between Earth's magnetic field and horizontal, the angle between Earth's magnetic field and horizontal is angle of dip, which is denoted by symbol delta. In this triangle, if I apply trigonometry and find cosine of delta, cos delta, we have BH upon B. Cos is adjacent upon hypotenuse, which is BH upon B. Hence, cross multiplying, BH comes out to be B cos delta. Again in this triangle, if I take sine delta, then that will be opposite upon hypotenuse. So BV upon BH. Therefore, BV equals B sine delta. These are our two equations. BH is equal to B cos delta, BV is equal to B sine delta. That is what I have written here in 1 and 2 equations. Dividing equation 2 by 1, we have BV upon BH is equal to B sine delta upon B cos delta. B cancels out. What we are left with is sine upon cos, which is tan delta. Tan delta comes out to be BV upon BH. So this is the formula for angle of dip or inclination, which is tan delta equals BV upon BH. As I have put a box here, you need to remember this result. Next, taking this equation 1 and squaring it. Similarly, taking this equation 2 and squaring it. Squaring and then adding the two equations. We get BH square plus BV square is equal to B square cos square delta plus B square sine square delta. That is what I am writing here. BH square plus BV square is equal to B square cos square delta plus B square sine square delta. In the right hand side, take B square common, and what we will be left in bracket is cos square plus sine square, which is 1 by the identity in trigonometry. So B square becomes BH square plus BV square. Taking square root, B equals root of BH square plus BV square. This same equation I am writing here. B is equal to root of BH square plus BV square. This is our equation 3, which we need to remember. And this equation for angle of inclination, I am writing here. Tan delta is BV upon BH. In these two formulas, what is delta? Angle of dip or angle of inclination. What is B? Resultant Earth's magnetic field at a particular point on Earth. What is BH? Horizontal component of Earth's magnetic field B. What is BV? Vertical component of Earth's magnetic field B.
So what are the three components of Earth's magnetic field? BH, which is horizontal component of Earth's magnetic field, theta, which is the angle of declination at that point, and delta, which is angle of dip or inclination at that point. Why do we have three components? Because Earth's magnetic field is three-dimensional. It exists in all directions. So it is 3D magnetic field. Earth's magnetic field is 3D. We are showing the three components of the 3D magnetic field as BH, theta, and delta. So these are the parameters which we need to remember for terrestrial or Earth's magnetism. Now let us find the expression for magnetic field and magnetic force. तो मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे वी विल हैव मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पे वी विल हैव मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज के बदले वी विल हैव मैग्नेटिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक चार्ज। अब ये मैग्नेटिक चार्ज क्या होता है? तो मैग्नेटिक चार्ज हम लोग ने देखा था, दिस इज नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक चार्ज क्या है? नॉर्थ पोल। कैन वी हैव नॉर्थ पोल सेपरेटली? क्या नॉर्थ पोल सिंगल मिल सकता है हम लोग को? नो। हम लोग ने देखा था मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, वो हमेशा डायपोल फॉर्म में रहता है। डायपोल कैसा? नॉर्थ एंड साउथ आर टुगेदर, नॉर्थ एंड साउथ आर टुगेदर। तो कैन वी हैव अ मैग्नेटिक मोनोपोल? कैन वी हैव अ मैग्नेटिक चार्ज? नो। तो इसीलिए ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, दिस फॉर्मूला विल बी रॉन्ग। मैग्नेटिक मोनोपोल को हम लोग ने प्लस एम से दिखाया था, प्लस एम मीन्स नॉर्थ पोल, तो दिस फॉर्मूला विल बी नॉट वैलिड, ये फॉर्मूला नॉट वैलिड है, इसीलिए मैंने यहां पे क्रॉस डाला था। अदरवाइज इफ मैग्नेटिक मोनोपोल वुड हैव एग्जिस्टेड देन वी विल डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक चार्ज मीन्स नॉर्थ पोल, बट दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अकेले मैग्नेटिक मोनोपोल नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए वी कैन नॉट गो विथ दिस डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड का गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग दूसरे तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज दैट वे? मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा। B is equal to F upon QV sin theta। ये फॉर्मूला कैसे आया? We get this formula from the expression for magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स के एक्सप्रेशन से हम लोग को ये फॉर्मूला आएगा। जैसे देखो F is Q into V cross B which is QVB sin theta। Therefore B एक साइड में रखा, तो what will we get? B is equal to F upon QV sin theta। B is equal to F upon QV sin theta। ये फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा। बट हाउ डिड वी गेट दिस मैग्नेटिक फोर्स फॉर्मूला? सो फॉर दैट वी सी दैट मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज। मोर द चार्ज मोर द मैग्नेटिक फोर्स, मोर द चार्ज मोर द मैग्नेटिक फोर्स, मोर द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज मोर द मैग्नेटिक फोर्स, मोर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मोर द मैग्नेटिक फोर्स। So that means magnetic force depends on charge, velocity, magnetic field, and it also depends on the angle between velocity and magnetic field। तो इसीलिए हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया? F is Q into V cross B। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों किया, डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज वी नो मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग को वेक्टर प्रोडक्ट देगा। Because this is a vector quantity, we have to take cross product here, and cross product लेंगे तो हम लोग के पास V cross B क्या आ जाएगा? VB sin theta, where theta is angle between velocity vector and magnetic field। Now, if we see this diagram, ये formula तो हम लोग को याद रखना है। This formula we have to remember, and this formula we will apply in these two
डायग्राम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे क्रॉस 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 दिखाया है और यहाँ पे मैंने डॉट 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 दिखाया है। व्हाट डज दिस डॉट रिप्रेजेंट? डॉट का मतलब क्या है? डॉट डिनोट्स आउटसाइड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या? तो अगर ये हम लोग मार्कर को देखें तो मार्कर का ही हम लोग को टिप दिखाई दे रहा है। ये मार्कर का हमें क्या दिखाई दे रहा है? टिप। ये मार्कर को एरो जैसा समझो। मार्कर को किसके ऐसा समझना है? एरो जैसा। तो ये एरो अगर मैंने ऐसे पकड़ के रखा है तो एरो कहां जा रहा है? दिस एरो इज मूविंग टुवर्ड्स यू। एंड व्हाट आर यू एबल टू सी व्हेन दिस एरो मूव टुवर्ड्स यू? You are able to see a point. That means point means it is moving towards you. It is moving outside the page. ये जो मोबाइल देख रहे हो, पेज देख रहे हो, इसके बाहर आ रहा है। तो दिस डॉट डिनोट्स आउटसाइड डायरेक्शन। डॉट क्या दिखा रहा है? आउटसाइड डायरेक्शन। जैसे ये डॉट है, ये कौन सा डायरेक्शन है? आउटसाइड। ये डॉट भी क्या है? आउटसाइड। और अगर हम लोग एरो के पीछे साइड में देखें तो एरो के पीछे साइड में ऐसा फूल जैसा रहता है। एरो के पीछे साइड में देयर इज अ क्रॉस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, क्रॉस जैसा। तो एरो के हम लोग पीछे देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? क्रॉस। ये देखो, ये एरो का फ्रंट साइड, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? डॉट। ये एरो का बैक साइड, ये एरो किधर जा रहा है? दिस एरो इज मूविंग अवे फ्रॉम यू। ये क्रॉस मतलब एरो किधर जा रहा है? अवे फ्रॉम यू। ये देखो, ये क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो एरो कहां जा रहा होगा? उस डायरेक्शन में। और ये अगर एरो डॉट दिखाई दे रहा है तुम्हें तो ये कहां आ रहा होगा? तुम्हारी तरफ। क्रॉस मीन्स अवे फ्रॉम यू, डॉट मीन्स टूवर्ड्स यू। तो इसीलिए क्रॉस का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम यू। एंड डॉट का मतलब क्या है? टूवर्ड्स यू। और क्रॉस में कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड, हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड द बोर्ड। ऐसा। अब मान लो एक चार्ज है, उसका वेलोसिटी इधर v राइट डायरेक्शन में। तो इफ वी डू दिस क्रॉस प्रोडक्ट, जो वेक्टर्स में तुमने राइट हैंड रूल से पढ़ा है, तो v क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर किधर है? राइट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इधर इनसाइड डायरेक्शन में। सो इफ आई होल्ड दिस यूजिंग टू, लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस इज अवे। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अवे फ्रॉम यू। इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड अवे, वेलोसिटी वेक्टर राइट में। तो इफ आई होल्ड दिस टू टुगेदर, तो v क्रॉस भी हम लोग राइट हैंड रूल से वेक्टर्स में पढ़ा था, वैसे करेंगे। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड विथ थंब आउटस्ट्रेच। ये थंब कैसा है? आउटस्ट्रेच। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड विथ थंब आउटस्ट्रेच। ये थंब आउटस्ट्रेच है, स्ट्रेच करके रखना है थंब को। फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। व्हाट इज द फर्स्ट वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर। सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर इज वेलोसिटी वेक्टर विच इज इन राइट डायरेक्शन, second vector is magnetic field vector which is inside direction. तो v क्रॉस b कहां आएगा? velocity right में, magnetic field अंदर। तो v क्रॉस b will be like this. Curl the fingers from first vector to second vector, first to second. तो thumb will give the direction of v क्रॉस b. तो thumb कहां है? ऊपर। तो v क्रॉस b कहां है? ऊपर। तो मैग्नेटिक फोर्स कहां है? ऊपर। तो इसीलिए v क्रॉस b ऊपर आया, इसीलिए मैंने मैग्नेटिक फोर्स कहां दिखाया? ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स कहां दिखाया? ऊपर। बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। और v क्रॉस b का डायरेक्शन कैसे आया? फ्रॉम चैप्टर वेक्टर्स। वेक्टर्स चैप्टर में हम लोग ने राइट हैंड थंब रूल देखा था। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड विथ थंब आउटस्ट्रेच्ड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इस क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इस मैग्नेटिक फोर्स का। तो कहां आया? मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। एंड इन दिस डायग्राम वेलोसिटी वेक्टर कहां है? अभी भी राइट में। वेलोसिटी वेक्टर कहां है? राइट में। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? टुवर्ड्स यू। मैग्नेटिक फील्ड इज डॉट। डॉट मतलब किधर? टुवर्ड्स यू। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी। अब फिर से मैं v क्रॉस b करेगा, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो v क्रॉस b। अब मेरा थंब कहां है? v क्रॉस b। राइट हैंड का थंब कहां है? नीचे। तो नीचे है, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स कहां है? नीचे। तो इन दिस केस मैग्नेटिक फोर्स इज डाउनवर्ड। फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर, सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। From first vector to second vector, curl the fingers. Then this thumb will give the direction of magnetic force. तो magnetic force इधर कहां आएगा? नीचे। Hence, by using this cross product, we'll find the direction of vector. जो हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है, उसका डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर होगा। This is how we'll find the magnetic force
and the magnetic field. We will consider a charge moving with velocity v in a magnetic field B, and the angle between velocity vector and magnetic field vector will be theta. In this case, angle between velocity vector and magnetic field is 90 degree. In this case also, angle between velocity vector and magnetic field vector is 90 degree. Cross denotes inside direction, dot denotes outside direction. So these are the formulas which we need to understand and the concept which we have to understand. If you are having problem with the direction of vector, then you need to restudy the chapter vectors of 11th standard, and there you will find the right hand thumb rule that is used to find the direction of cross product. So revisit the direction of cross product if you are having problems with direction of cross product, which is giving us the direction of magnetic force. Remember this expression of magnetic force. Magnetic force F on a moving charge moving with velocity v in a magnetic field B, and the angle between velocity and magnetic field is theta. So F is equal to Q into V cross B. From this magnetic force expression, we will find another expression for magnetic force on a current carrying wire placed in a uniform magnetic field. This is the magnetic force on a moving charge moving with velocity v in a magnetic field B. Next will be our expression of magnetic force on a current carrying wire having length L and placed in a magnetic field. Let us now find the expression for magnetic force on a current carrying wire placed in a uniform magnetic field. So this is a current carrying wire. Suppose there is a current I in this wire, and if we place this in a uniform magnetic field, इसको हम लोग ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया. अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? मैग्नेट. अगर हम लोग एक यू शेप मैग्नेट बना ले, यू शेप मैग्नेट, मान लो यू शेप मैग्नेट है, तो यू शेप मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड. एक यू शेप मैग्नेट लिया मैंने, हॉर्स शू मैग्नेट जिसको बोलते हैं. यू शेप मैग्नेट का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने करंट कैरिंग वायर लगा दिया. तो उस पे कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज द एक्सप्रेशन विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड. तो हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, इसका एक्सप्रेशन क्या निकाला था हम लोग ने पिछले डेरिवेशन में? F is Q into V cross B. Magnetic force on a moving charge placed in uniform magnetic field B. अगर हम लोग का चार्ज Q के बदले, अगर इस चार्ज Q के बदले we have a small charge dq, then the small force dF on this small charge dq moving with velocity v in uniform magnetic field B, क्या होगा? dF is equal to dq into bracket open V cross B. Now, in this expression, substitute velocity as dl by dt. Velocity as dl by dt in this expression. So we get our new expression for magnetic force. dF is equal to dq, bracket open, velocity के बदले हम लोग ने क्या डाला? dl by dt. Velocity के बदले हम लोग ने क्या substitute किया है? dl by dt cross B. Now, we take this dq by dt कॉमन. dq by dt को हम लोग क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं. dq by dt को हम लोग ने अलग से लिख दिया. So we get this new expression for small force on a small charge dq. But dq by dt क्या होता है? dq by dt is current I. Current is charge upon time. Charge upon time क्या है? Current. तो df is equal to I bracket open dl cross B. अब what is this dl vector? dl vector is current element. इसका नाम क्या है dl vector का? Current element. dl vector का नाम क्या है? Current element. इसका मतलब क्या है? अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो इसमें मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया. ये टोटल लेंथ वायर का कितना है? मान लो L. टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना है? L. तो अगर इसमें छोटा सा एलिमेंट लूं मैं, छोटा सा एलिमेंट, तो उसका लेंथ कितना मानेंगे? dl. That is known as current element. dl, which is current element.
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, वेक्टर है ना ये, तो डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, दैट इज करंट एलिमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इस केस में करंट ऊपर जा रहा है तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन कहां होगा, ऊपर। करंट कहां जा रहा है, ऊपर, तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन कहां होगा, ऊपर। डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो df इज इक्वल टू आई इंटू डीएल क्रॉस v। अगर हम लोग ने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन ऑफ df क्या होगा, f, और इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा, l। इंटीग्रेशन ऑफ df इज f, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज l। तो हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ l placed in uniform magnetic field B. That expression of magnetic force will be F is equal to I bracket open L cross B, where F is the magnetic force, I is the current through the wire, L is current element का length, current length of the wire, L is the length of the wire, DL is current element, L is the length of the wire, DL is current element. And what is this direction of L vector? It is in the direction of DL vector, which is in the direction of current. Direction of current element is in the direction of current. So this is the expression for magnetic force on a uniform current carrying wire placed in a uniform magnetic field B. अब अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाले इस केस में, so this is a current carrying wire और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनसाइड। अगर क्रॉस याद रहेगा, क्रॉस मींस क्या, इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो मान लो मैंने ये रेड कलर के मार्कर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड कहां दिखाया, इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। और करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन ऑफ करंट कहां है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर इज अपवर्ड, तो करंट एलिमेंट ऊपर, करंट एलिमेंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो इफ आई डू L क्रॉस B, ये डायरेक्शन ऑफ डीएल एलिमेंट, करंट एलिमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज अपवर्ड, तो L ऊपर, B मैग्नेटिक फील्ड B अंदर। तो राइट हैंड लेके हम लोग ने L क्रॉस B किया, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर विच इज L वेक्टर टू सेकंड वेक्टर विच इज B वेक्टर। तो L क्रॉस B का डायरेक्शन क्या आएगा, इट इज लेफ्टवर्ड, तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे कहां आएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज लेफ्टवर्ड। नाउ कमिंग टू सेकंड एग्जांपल, इधर भी करंट कहां है, ऊपर, तो मैंने करंट एलिमेंट कहां रखा, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने डॉट से दिखाया, डॉट मतलब तुम्हारी तरफ, डॉट मतलब कहां, तुम्हारी तरफ, तो डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड और करंट कहां, ऊपर। अब L क्रॉस B करो, L का डायरेक्शन ऊपर, B का डायरेक्शन तुम्हारी तरफ, तो L क्रॉस B कहां आएगा, L क्रॉस B, टेक द राइट हैंड and curl the fingers from first vector which is L vector to second vector which is B vector। तो B ये तुम्हारी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ, L वेक्टर ऊपर, तो L क्रॉस B is towards me, मतलब राइट डायरेक्शन। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स कहां आएगा, राइट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स इज इन राइट डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई magnetic force on a current carrying wire placed in a uniform magnetic field B. So this is the formula which we have to remember. This is the formula for magnetic force on a moving charge moving with velocity v in uniform magnetic field B. This is the magnetic force on a current carrying wire placed in uniform magnetic field B. डायरेक्शन हम लोग को कैसे मिलेगा, इधर v क्रॉस b वेक्टर से, इधर कैसे मिलेगा, L क्रॉस b वेक्टर से। What is the direction of L vector? It is in the direction of current. And what is L vector? L vector is the length of the wire, which is DL vector, which is current element, उसका डायरेक्शन कहां है, in the direction of current. So these are the things which we need to remember. This expression of magnetic force we will use further in our application of cyclotron. This application of this formula of magnetic force on a current carrying wire is used in numerous applications.